Hello everyone, my name is Aastha and you are watching Delhi Knowledge Track. I welcome you all to our classes for International English Olympiad for class 4th. Today is the first class in our series of our lectures for the IEO. Today we will be doing a brief introduction about कि IEO क्या होता है, इसमें syllabus क्या होता है, इसमें इसका पैटर्न क्या होता है एंड हम आगे की क्लासेस में कैसे टॉपिक वाइज हर चैप्टर को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल दैट टू यू. नाउ दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे. सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है कि ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम किस बारे में कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर स्टडिंग फॉर द इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड. सबसे पहले हम समझेंगे कि IEO क्या होता है, कैसे कंडक्ट होता है और कौन कराता है, व्हाट इज द पैटर्न. फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि चलो हमें समझ आ गया कि IEO है क्या. फिर हम ये समझेंगे कि हाउ विल इट हेल्प मी, मतलब कि मैंने IEO का ओलंपियाड देने के लिए आई हैव डिसाइडेड, बट हाउ विल इट रियली हेल्प मी, हाउ विल इट कंट्रीब्यूट टू माय ग्रोथ, टू माय एजुकेशन, टू माय academia. So ये सब कुछ हम लोग ये will all this I will explain to you. Then the question will come, how do we study? And for this we will have to first understand the pattern of the exam. The last thing to understand would be the complete syllabus. जो एग्जाम में different sections में divided होता है, A, B and C, and then there is reading and there is written and achievers section as well. So ये सब कुछ हम समझेंगे. So now let's start. And the first question that comes to our mind is, what exactly is the International English Olympiad? Right? So let's see. Now this International English Olympiad is being conducted by the Science Olympiad Foundation, SOF. Science Olympiad Foundation is a broader foundation जो various kinds of Olympiads conduct कराते हैं, जिसमें से one of them is IEO. Okay, so the organizer is SOF. Then now this exam is for all the classes 1st to 12th, and all these classes have separate exams for them. Now you see all the students from various states, various cities, and even internationally, all of them can give these exams, and for every class there is a separate exam. So you 4th class students, you will be competing with 4th class students from all over the country, from all over the world, those who are participating in the Olympiad. And now the broad aim of IEO is to provide the foundational level preparation. Foundational level preparation क्या होती है? For example, किसी भी चीज को समझने के लिए you have to first understand its basics. You have to first understand the main concept behind it. So IEO आपको help करता है कि आप English के लिए अपना एक strong base बना पाओ. आपके अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको आगे जब when you will be learning a little more of advanced English, I can say, so then that will be much easier for you. All right. So now the next question. First we have understood what IEO is. Now the second question that comes to our mind is, how will it really help me?
Now, okay, I have understood what IEO is, who conducts it, how is it conducted. But the important question is, how will I be benefited from IEO? Why should I work hard for it? Now, you are given all these lectures, these videos, and you are watching them, and you are studying, and you will be taking quizzes as well. So, why should I work hard for it? And how will? So, let's try to understand that. Now you see there are two broad reasons, or these columns I have made to make you understand why IEO is going to help you and how is it going to help you. Now, first of all, when we talk about academics, we talk about the school exams, whatever unit tests and summative assessments and half yearlies and terminal exams you have, all of them comprise of English. And even your English syllabus, I am pretty sure that whatever topics we are going to study, they will cover most of your English grammar syllabus. So, by studying for IEO, you are completing your school syllabus as well. In fact, you are doing a little more than that, and you are already practicing mock exams as well. So, you will have an edge. आपको एक advantage होगी over the other students who are not giving the IEO. And the other reason is focus on communication and use of learning. There will be no rote learning here. Now, English is one subject where you cannot rote learn. No rote learning. Now, this is because in English, what happens is there is direct application. There is practical use of the concepts learned. कोई theory नहीं है. For example, when you study history, आपने पढ़ा, you read about some war, or you read about some ruler, and you learned about their facts. So you can memorize them, and when the question is asked in the exam, you can write that down. But in English, कोई आपसे, there will be no question like what is a noun, what is a verb, what are the various forms of tenses. ऐसा कोई question नहीं आएगा. Rather, question आएगा practical knowledge पे. Practical knowledge मतलब आपको verbs पता होंगे कि क्या होते हैं, पर question आएगा जिसमें आपको verb लगाना होगा, जिसमें आपको verb का tense लगाना होगा. इस तरीके से आपके practical questions आएंगे. So इसमें आप कुछ भी रख नहीं सकते हैं. And the aspect which says focus on communication and use of learning. Now, when you learn the basic concepts of grammar, जैसे हम vocabulary करेंगे, हम nouns करेंगे, हम antonyms और synonyms, हम इतने सारे topics करेंगे. तो इन सब topics को जब आप समझोगे तो obviously आपकी vocabulary improve होगी, and आप उन words को, उन concepts को आप अपनी English में, आप अपनी जो English communication करेंगे उसमें आप use कर पाएंगे. तो that will improve your speaking skills. Speaking skills improve हुई. And then if you understand these concepts well, तो अगर आपसे when people talk to you in English, you will be able to understand them better as well. तो आपकी listening skills भी improve हुई. And writing skills भी improve होंगी. कैसे? Because when you learn the new words and you understand the grammar properly, तो आपकी जो writing skills हैं उसमें भी आपकी एक enhanced learning दिखेगी. Your teacher will know that yes, this student knows his or her concepts, and they are writing and they are using correct grammar, and they are using the correct punctuation, and they are even using new words. So you will get your extra marks in school syllabus as well, and you will improve your English communication also. Now here
I'm going to give you a very basic example of how IEO will help you in understanding different aspects and improving your grammar. For example, you see this is a question. The question is, what time will you meet me tonight? Now you should quickly write an answer to this question. Okay, or maybe think about it, or just I would prefer अगर आप एक इसका आंसर लिख लें अपने पास. So now you see, this question could have three answers, three types of answers, and all three of them would be different. और इनमें difference पता चलेगा हमें उनकी grammar से. You see, first, I can meet you at 7. If I ask someone, what time will you meet me tonight? So, if the person says, I can meet you at 7, this means ये possible है कि मैं तुम्हें 7 o'clock मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ. Okay. Next answer could be, I will meet you at 7. Now, here there is a promise. We were using will. I'll means I will meet you at 7. So, will is for a future plan or promise. So, the person is making a promise कि हाँ, I will meet you at 7. Okay. Then the other answer could be, I would meet you at 7. Now, would is used that there might be conditions which make it difficult. Now, इधर कोई promise नहीं है. इधर कह रहे हैं कि मैं मिल सकता हूँ. But there might be conditions. मतलब अगर कुछ दिक्कत आ गई, there might be some difficulty, तो फिर there might be a problem in meeting you. So I would meet you at 7. So you see, for the same question, there could be three kinds of different answers. And अगर आप इन sentences में इसकी grammar को समझ के आप अगर correct usage करने लग जाएं, तो आपकी English overall improve ही होगी. Your speaking skills, your listening skills, your reading skills, all of them. So I hope you understood the example. Now let's move on. Now you see here, IEO में क्या होता है? IEO में there is a student performance report that is given at the time of the result. Once you give the IEO, आपको उसके बाद एक student performance report मिलती है जिसमें various parts होते हैं, and we will see ये student performance report आपको कैसे help करेगी. Okay? Now you get section A of the report, and the section A has this provides the students marks and the rank achieved in school, city, zone, region and international level. Now you see the student performance report के section A में क्या होता है? आपके जो total marks आए हैं, first of all, आपका जो भी आपके 35 questions हैं उसमें आपके जो भी marks आए हैं वो आपके मार्क्स होंगे. आपकी जैसे रिपोर्ट कार्ड हो गई है एक तरीके की, तो आपके मार्क्स हैं, फिर आपकी रैंक है. नाउ द रैंक अचीव्ड इन स्कूल लेवल, सिटी लेवल, जोन लेवल, रीजन लेवल एंड द इंटरनेशनल लेवल. नाउ अलग अलग लेवल्स पे यू सी स्कूल लेवल पे, फॉर एग्जांपल from your class about 40 students are giving the IEO exam, and out of them, if you have performed the best and you have received the best marks, so your rank in school will be 1. But similarly, अगर आपकी city में तो बहुत सारे schools होंगे. Suppose Delhi itself has so many schools, and in Delhi if there are about I can't even guess, there must be more than 1,000 students giving the exam, more than 1,000, 2,000 students giving the exam, giving the Olympiad. So उसमें whatever rank you get, suppose जो भी आपकी rank आएगी तो वो city level पे, then the zone level, region level and the international level.
International level, suppose somebody is giving an exam abroad, like someone is giving an exam from London or from New York, then you will be able to compare your ranks with them as well. तो ये आपको एक एनालिसिस करने का ऑप्शन भी देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मार्क्स पता चलेंगे कि आपके टोटल मार्क्स क्या आए हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड में आते हैं. फिर आपको अपनी रैंक पता चलेगी कि मैं किन स्टूडेंट से कितना बेटर कर पाया हूं या कर पाई हूं. ओके, नाउ the next section, the section B. Now it provides a past year-wise analysis of the student. Now if you are registered with the IEO, when your school is registered with the IEO, तो IEO के पास क्या होता है, आपका एक रिकॉर्ड रहता है. Now you are in 4th class. If you had given the exam in 3rd class, in 2nd class, in 1st class as well, तो आपका year-wise analysis आपको आपकी रिपोर्ट में मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट क्लास में आपके 45 मार्क्स में से सपोज यू गॉट 40 मार्क्स, देन इन सेकेंड, लेट मी राइट दैट डाउन फॉर यू. इन क्लास 1 you got 45 marks, 40 marks, sorry. Then in class 2 you got 35. Then in class 3 you got 42. So आपकी जो analysis है ना, ये analysis IEO will provide that to you. Different sections में आपके कितने marks आए हैं उस तरीके से. तो ये आपको अगेन आपको ऑप्शन दे रहा है अपना एनालाइज करने का, आपका पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस, कि मैंने पिछले साल से इस साल इतना इम्प्रूव किया है, आई हैव डन बेटर, और क्या मैंने कुछ मिस्टेक करी है, हैव आई फॉल्टर्ड समवेयर. सो इट विल हेल्प यू इन ऑल दिस एनालिसिस. द नेक्स्ट, section C. Now you see the section C, what it does is it provides, let me just erase this. Yes, so section C says it provides correct answers to the questions asked in the Olympiad exam. The answers given by the student in the performance comparison of the student's answers versus other students in the zone and at the international level. Now section C बहुत comprehensive है. You see, first of all, it will provide correct answers to the questions. मतलब जो भी आपकी questions आए थे IU में, उसकी correct answers आपको मिलेंगे section C में. And then एक तो आप जो correct answers है, and then the answers given by the student. मतलब आपने जो आंसर किया, करेक्ट आंसर्स वर्सेस योर आंसर. इफ योर आंसर इज करेक्ट देन तो दोनों आंसर्स सेम, बट इफ योर आंसर इज इनकरेक्ट इट विल प्रोवाइड यू विद द करेक्ट सॉल्यूशन. एंड देन द परफॉर्मेंस कंपैरिजन, द परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर्स वर्सेस अदर स्टूडेंट्स इन द जोन एंड एट द इंटरनेशनल लेवल. मतलब एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन, क्या आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी इन कंपैरिजन जो और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एट द जोन एंड एट द इंटरनेशनल लेवल. जोन होता है जैसे साउथ जोन एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, अलग अलग जोन्स होते हैं. तो आपकी सिटी जिस जोन में आती है, तो वेरियस सिटीज होंगी एक जोन में, तो उस जोन में कितने भी स्कूल्स हैं, कितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इन कंपैरिजन टू दैट. सो स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है आपको इन तीनों में आपका हेल्प करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी रैंक का कंपैरिजन हो पाएगा. सेकेंड वन वुड बी कि आपकी ईयर वाइज एनालिसिस हो पाएगी कि आपके कितने आपके कैसे आपने परफॉर्म किया है और कहाँ आपने इम्प्रूव किया है, कहाँ आपको अभी भी प्रॉब्लम है, यू सी कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अभी. एंड सेक्शन सी आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे, तो आप कंपेयर कर सकते हैं मैंने कहाँ गलती करी. एंड एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है, आपकी परफॉर्मेंस होगी
वो कंपैरिजन होगा अलग अलग स्टूडेंट्स का फ्रॉम द जोन एंड द इंटरनेशनल लेवल एज वेल. ऑलराइट, सो बाकी सेक्शंस देखते हैं हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट के. So now the next section of the student performance report will tell you, this is provides a percentage score analysis with the student with a comparison of the class, city, zone and region level. Percentage score analysis, which means suppose out of 50 marks, if you have achieved 45 marks, so you have achieved a 90% score. Okay, and similarly आपका एग्जाम होता है आई थिंक फॉर 45 मार्क्स एंड उसका if you have achieved say 40 marks or 41 marks, we can call it again 90%. So 90% जो आया है, this will be analyzed with the comparison at the class level. Now if in your class, if someone has achieved say कितना हो गया, हाँ 36 marks, so 36 marks become 80% and आपका 90% है, so ये आपको comparison करने में help करेगा. फिर same at the city level, जो आपकी city में अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स ने आपको वो किया IEO का एग्जाम दिया है एंड उसमें उनके कितने परसेंटेज आए हैं. Then at the zone level and at the region level as well. ये भी आपको performance in comparison में help करेगा. Now the next section, this one provides a comparison of the average marks analysis at the school, city, zone, region and international level. Now the school the average marks analysis. Average marks क्या होते हैं? Now suppose if 40 students are giving the exam, so 40 students में there will be different marks for all the students. So those different marks, उनका एक average marks निकलेंगे. The average marks वो बन जाएंगे आपके स्कूल के average marks. फिर जो city में सारे schools हैं, schools में जितने students हैं, उन सब ने जो एग्जाम दिया है उनकी सबके जो मार्क्स हैं उन सब से एक और सिटी की एवरेज, then zone average and region average and the international average. You see then that average will be compared among all these criterias. In section F, it provides a topic-wise performance analysis of the student. Now टॉपिक वाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या है कि अभी मैं आपको बताऊंगी वेरियस आपके जो टॉपिक्स होते हैं, वेरियस सेक्शंस जो होते हैं, तो आपको सेक्शन के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और उस सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे, कितने आपके क्वेश्चंस गलत थे, कितनी आपकी एक्यूरेसी है, तो यही सब आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगी so that आप एनालाइज कर पाओ कि मेरे को कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कौन सा एरिया मेरा स्ट्रेंथ है. और आप जब ये रियलाइज कर लोगे तो यहाँ पे मैंने शायद ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं, यहाँ पे मे बी आई नीड टू फोकस लिटिल मोर. तो आप अपने नेक्स्ट टाइम के लिए फॉर द नेक्स्ट ओलंपियाड देन यू कैन फोकस ऑन योर वीक एरिया स्पेशली. ऑलराइट, सो यही थी हमारी स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में 6 सेक्शंस हैं, A, B, C, D, E, F and all of them I have explained it to you कि आपको कैसे आपको हेल्प करेंगे इन दी परफॉर्मेंस एनालिसिस और आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए. अब क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है एग्जाम देने का? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नॉट योर मार्क्स, नॉट योर मार्क्स. The most important part is कि जैसे अगर आपके 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके 7 मार्क्स आए हैं. What is important is कि आपकी जो 3 मार्क्स गए हैं, you look at those 3 marks and you see कि आपने गलती कहाँ करी है. And once you realize your mistake, then you will not repeat that mistake
for the next time. No matter you are getting 7 marks or 2 marks or 3 marks, what is important is कि आप देखो कि आपने गलती कहाँ करी है, आप उस एस्पेक्ट पे, उस सेक्शन पे फोकस करें और मेक श्योर करें कि ये गलती दोबारा ना हो. कम मार्क्स आए हैं आपके, कोई बात नहीं. You should just focus on improving yourself and not making the same mistakes again, not repeating those mistakes. All right. So ये तो हुई हमारी student performance report. Now let's move on to our next topic. Now you see another question that comes is, हमने पहले ये समझ लिया कि IEO क्या है, कैसे कंडक्ट होता है. सेकेंड क्वेश्चन हमने ये समझ लिया कि ये हमें हेल्प कैसे करेगा हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में, हमारी राइटिंग स्किल्स में, रीडिंग स्किल्स में, और हमारे स्कूल सिलेबस से भी सिमिलर है तो वहां भी हेल्प करेगा. एंड द थर्ड क्वेश्चन दैट कम्स इज, सो व्हाट डू वी डू एंड व्हाट डू वी हैव टू स्टडी एंड हाउ डू वी स्टडी. अब हाउ डू वी स्टडी, ये सब कुछ समझने के लिए हमें सबसे पहले एग्जाम की जो डिमांड है, एग्जाम क्या चाह रहा है, एग्जाम किस तरीके से होता है, वो हमें समझना होगा. ऑल राइट. सो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. पैटर्न ऑफ द एग्जाम मतलब कि एग्जाम में आपके पास 35 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, 35 क्वेश्चंस आएंगे. 35 क्वेश्चंस में से टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 आवर का, एंड इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स कैसे कि आपके जो 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस विल ईच बी ऑफ 1 मार्क, but there will be 5 questions which will be of 2 marks, जो achievers section होगा. ये हम आगे जाके मैं आपको tabular format में समझाऊंगी. I was a little confused कि आपके 45 marks है, 40 marks है. I have rectified it and said कि आपके actual में marks होते हैं 40 marks. Okay, so 40 marks का आपका exam होगा. Total questions will be 35 marks. And time given will be 1 hour. So this is the basic pattern. Now let's do an analysis. अब जो आपका एग्जाम होगा उसमें 4 sections होंगे. Okay, 1, 2, 3 and 4. So the first section किस बारे में होगा? Let's see. Now the first section will have these many topics. आपको ये देखने में तो बहुत सारे लग रहे होंगे कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये वर्ड लेटर्स तो गिरे ही जा रहे हैं, इतने सारे टॉपिक्स हमें करने पड़ेंगे. बट लेट मी अश्योर यू कि मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी. आपको बस आराम से आपको यू हैव टू फोकस ऑन द वीडियो एंड यू हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे सबका, तो जो मॉक एग्जाम है, जो क्विज हम करेंगे, उसमें आप ऑनेस्टली अपने को आंसर्स करना और जो आपकी मिस्टेक्स हो उन्हें रेक्टिफाई करना, तो आपके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा. These first section will include collocations and spellings, gender, singular plural, one word substitution, synonyms and antonyms, nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, contractions, articles, prepositions, conjunctions, tenses, punctuation, jumbled words, basic question tags, proverbs, basic questions and the question tags, proverbs and idioms, etc. So all of these are basic grammar topics. All these. They are very easy
You just have to focus on understanding the core concept. आप example समझना और honestly को इसको answer करना. So this will all be easy for you. Now let's start. So now the second section. What will the second section have? Now the second section will be a little tricky because it will have certain reading comprehensions. Search for and retrieve information from various text types like stories, anecdotes. Understand information through pictures, timetable format. Acquire broad understanding and look for specific information in short text like messages, invitations, etc. So now this section is basically focusing on कि आप कितना analyze करके, कितना read करके, this is testing your reading skills as well, कि आप read करके उसमें से आप information समझ पाते हैं, उसे retrieve कर पाते हैं, उसके basis पे questions answer कर पाते हैं या नहीं. So search for and retrieve information from various text types. Stories and anecdotes. जो anecdotes वो होते हैं जैसे किस्से. फॉर एग्जाम्पल योर दादी और योर नानी अगर वो आपको अपने बचपन की कहानी कोई सुनाते हैं या कोई मेमोरी शेयर करते हैं, कोई स्टोरी, तो दैट इज एन एनेक्डोट जो वो आपको सुना रहे हैं. इट इज कॉल्ड एन एनेक्डोट. सर्च फॉर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट. आपको क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेक्स्ट दिया होगा कोई स्टोरी या पोम या एनेक्डोट, वो आपको पढ़ना है एंड देन यू हैव टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. Then understand information through pictures and timetable format and broad understanding and look for specific information in short text. So ये overall आपका reading comprehension का section है. Okay, now the next one. Now we come to the third section. First one is about the broad grammar topics. The second one is about the reading comprehension basically. So let's see what the third section is about. Now this section talks about your ability to understand situation-based variations in functions like apology, greeting, introduction, request. Now you see all these are different. Apology, greeting, introduction, request, all these are different. So हर situation के हिसाब से जो functions होते हैं यही आपको एक broad understanding section 3 में आपकी test होगी. So now the next section. Last section is the fourth section. This is the achiever section. Let's see इसमें क्या होगा. Now, as the name mentioned, achiever section. Achiever section मतलब it will have higher order thinking skills questions. HOTS कहते हैं हम इन्हें. HOTS, we call them HOTS. अब इसमें जो syllabus है वो section 1, 2 and 3 का सेम रहेगा, बट इसमें थोड़े से एडवांस्ड लेवल वाले क्वेश्चंस होंगे. इसका सिलेबस तो सेम है बट थोड़े से एक्स्ट्रा नॉलेज जिसमें रिक्वायर्ड होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसमें रिक्वायर्ड होगी. दिस इज द अचीवर सेक्शन एंड दिस इज व्हाई दीज आर दोज 5 क्वेश्चंस जो होंगे 2 मार्क्स के. 5 into 2 तो ये सेक्शन आपका 10 मार्क्स का होगा. Otherwise जो बाकी sections हैं all of them are for 1 mark each. Every question is for 1 mark each, remember. So these 5 questions, the section 4 will have 2 marks each because this is the achiever section and it will have HOTS questions. So this is all for the 4 sections of your exam.
Now you see, these are the 4 questions that we have talked about. The word and structure knowledge, which had the grammar topics, reading, which had the comprehension, and the third section, which had spoken and written expression, and the fourth section, achiever section. So all these 3, as I told you, they will have 30 questions, 1 mark each. So यहाँ total हो जाएगा 30. And the achiever section, which has the HOTS questions, this will have 5 questions, and every question will be of 2 marks. So 5 into 2, it makes it 10, and 30 plus 10, so total marks हो गए आपके 40 marks. That's what I told you कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो 35 questions का है. आपको मिलेगा 1 hour. The time given to you will be 1 hour. And you have to solve 35 questions of 40 marks. जिसमें these 3 topics plus the achiever section. And achiever section में क्या syllabus है? It is the same syllabus as these 3. इनका जो syllabus है same syllabus आएगा, but आपका थोड़ा सा advanced knowledge check होगी. That's why they are a little difficult to solve, and but advantage भी है because they are of double the marks. So this is your whole pattern and your complete syllabus for the exam. So now the most important question that comes is, when are the results declared? Now आपने IEO का एग्जाम दे दिया, and सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसके बाद वो ये है कि when will the results come out? You will be excited to know that how have I performed, how have my peers performed, and क्या मेरी ranking रही है. So the results will be declared. They're usually declared within a few months, which means maximum period of 2 months the results are declared, because जो हमने बात करी, this is about the level 1. Okay, the level 1 we have talked about. अगर आप level 1 में you pass the certain criteria, then you get a chance to participate in level 2. So the results are announced, and then the level 2 exams also take place. So the results are declared. For example, last year the results were declared within about 45 to 50 days, which makes it about 1.5 or 2 months. So जल्दी आ जाते हैं results, you won't have to wait much, and उसके हिसाब से आपकी level 2 के लिए आपकी participation हो जाती है. आपकी participate मतलब आप कर सकते हैं. तो यही एक broad understanding थी. So that's it. And हमने क्या क्या कर लिया है? Quick summary. हमने सबसे पहले किया कि IEO क्या होता है. साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कराती है. अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, एंड आपकी फाउंडेशन फॉर्म होती है. फिर हमने ये किया कि हमें हेल्प कैसे करेगा. कि हमारे स्कूल की प्रेपरेशन के लिए. फिर इट विल ऑल्सो हेल्प इन आवर कम्युनिकेशन एंड रीडिंग एंड स्पीकिंग. फिर इसके बाद हमने देखा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है. 35 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो 40 मार्क्स का पेपर होता है, 1 आवर में करना होता है. उसमें हमारे पास 4 सेक्शंस हैं. तीनों सेक्शंस, फर्स्ट इज वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, second is the reading comprehension, and third is spoken and written. फिर इन तीनों का सिलेबस जो है वो 4th सेक्शन में हमें हॉट्स के फॉर्म में पूछा जाता है. एंड फिर उसके बाद हमने इसमें ये भी एनालाइज किया था कि जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए हमारे वेरियस
परफॉर्मेंस और हमारे मार्क्स, रैंकिंग मिलती है हमें। ऑल राइट, तो फिर उसके बाद हमने फाइनली ये देखा कि रिजल्ट्स कब आते हैं। रिजल्ट्स कम अराउंड विद इन से maximum 2 months from the date of your exam. Okay, that's it now. Thank you, and we will start with the topic wise series, जिसमें हम टॉपिक करेंगे, उसके एग्जाम्पल समझेंगे और आपको सैम्पल क्वेश्चंस आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग, सो दैट आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और बस आपका वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि यू शुड फॉर इंग्लिश द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रीडिंग इंग्लिश, विच मीन्स इंक्लूडिंग इंग्लिश इन योर लाइफ। इंक्लूडिंग इंग्लिश इन योर लाइफ मतलब आप कैसे कर सकते हैं कि यू शुड हैव ऑल द कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश, एंड आप बात करें इंग्लिश में अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से, and even if you're saying it wrong, you should आप अपनी टीचर से पूछें, आप लर्न करें कि आप मेरे को बताओ कि how can I speak this, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो इसको मैं सही कैसे करूँ, how do we say it correctly in English, and उसके लिए आपको क्या करना होगा, और you should maybe read the newspaper अगर बोरिंग लगता है, you should read the kids newspaper, and फिर you should also read magazines जैसे comic books आती हैं, about various these comic characters होते हैं उसमें different, and they're very interesting actually, and if you watch English movies they also help you in developing your communication skills and your listening skills as well, and also you should write a lot. Now, for those of you who keep a diary, now keeping a diary is a very important and very rather a necessary exercise for the students, because it is always advised to keep a diary, so that क्या होता है कि when you are done with the day, so towards the end of the day when you write about it, फर्स्ट मैं आपको समझाती हूँ कि डायरी होती क्या है, दोज ऑफ यू हु डोंट नो। अ डायरी क्या होती है, उसमें यू कीप द नोट्स ऑफ योर लाइफ, बेसिकली एक आपकी लाइफ स्टोरी हो जाती है, जिसमें एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप यू राइट इन दैट डायरी कि ना टुडे दिस हैपेंड एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट, और व्हाट आई लर्नड टुडे, एंड व्हाट आर माय प्लान्स फॉर टुमारो। सो यही सब आप ये आपकी लाइफ में जो रेगुलर चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल यू वेंट ऑन अ पिकनिक और यू वेंट टू स्कूल एंड सम फनी थिंग हैपेंड, योर फ्रेंड टोल्ड यू अ जोक और समथिंग लाइक दैट, सो आप ये सब अपनी डायरी में लिखते हैं अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। ऑलराइट, एंड आपको एक मतलब इसी से छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी स्पीड भी बढ़ती है, एंड आपकी नए आप रोज आपका भी मन करेगा कि मैं नया वर्ड यूज करूं आज, तो आपकी वोकैबुलरी अगर आप नई यूज करेंगे तो वो आपको ऑलरेडी आपके दिमाग में ना वो बैठ जाएंगे वर्ड्स, एंड आप उन्हें अपने कॉन्वर्सेशंस में भी यूज करना शुरू कर देंगे। सो यू सी ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं इंग्लिश के लिए, सिर्फ वीडियोज एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से नहीं होता, ये सब कुछ करेंगे ना तो आपको वीडियोस में भी यही लगेगा कि ये सब तो मेरे को आता है, और ये सब किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा, बल्कि बस आपको पढ़ के और आपको ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके आपको सब समझ आ जाएगा, सब आपकी लैंग्वेज में, सब आपके माइंड में इनहेरेंट होने लगेगा। So I hope that you have understood the brief introduction about IEO. अब हम नेक्स्ट क्लासेस से शुरू करेंगे, हर टॉपिक को लेके हम उसको समझेंगे। This was just an introductory class. So see you in the next videos. Thank you.